how the health minister of Haryana told a serving IPS officer, a young woman, to get out in full public view, and then the Haryana government backed him and got her transferred. वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। सर हम थोड़ी उनको जान से थोड़ी ना मारते हो तो आगे फिर करेगा अपना काम। Barely 24 hours after Sangeeta Kalia, the young SP of Fatehabad, stood up to the minister, she was transferred. It all happened after a conversation between the 2010 batch IPS officer and Health Minister Anil Vij at this District Grievance Committee meeting. The minister accused the cops of not doing enough to stop illegal sale of liquor. The SP countered him, saying it's the government that gives liquor licenses. An angry minister asked her to leave. But she refused, so he walked out instead and later complained to the chief minister. काम ना करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी. As the video went viral, many applauded the stand taken by the SP, and this is what she said before she was transferred. But the opposition took the opportunity to attack the government. Action by a government which has failed on all fronts, and now they have resorted to taking out their frustration on bureaucracy and on officers. मुझे लगता है कि आज राम भरोसे प्रदेश चल रहा है. The National Commission for Scheduled Castes has sought a response from the Haryana government for allegedly harassing the officer. चीफ सेक्रेटरी को हम लेटर लिख रहे हैं और उस चीफ सेक्रेटरी को ये मैं कहूंगा, हिदायत हमने ये दी है कि इसकी जांच करी जाए. Health Minister Anil Vij is not new to controversies. Earlier this year, he accused the state government of spying on him. The five-time MLA from Ambala had also questioned the chief minister's choice of making actor Pariniti Chopra the state's brand ambassador for the Beti Bachao campaign. With Anand Patel in Chandigarh, Vijay Kawar for NDTV. So does anything justify a minister of a state yelling at an IPS officer and telling her to get out, and then the state government, rather than defending this officer, actually having her transferred out to what is considered a hardship posting? Joining us now for his views on this, Jawahar Yadav, the officer on special duty to the Haryana Chief Minister. We are also joined by Dr. Ajoy Kumar, spokesperson of the Congress, and a serving IPS officer, Amitabh Thakur. Thank you all very much for joining us. जवाहर जी, ये एक चीज बताइए, अगर एक मंत्री चिल्लाता है, अगर एक मंत्री एक अफसर को गेट आउट ऑफ हियर कहता है, आप ये मानते हैं कि ये गलत है? आपने पूरे जो 5 मिनट का घटनाक्रम है उसके 2 शब्दों को केवल पकड़ा है. ये घटनाक्रम किस रूप में घटा कि एक एनजीओ ने ये कहा कि फतेहाबाद में जो अवैध शराब है या अवैध नशा है वो बढ़ रहा है, उसके खिलाफ कुछ कठोर नियम आपको स्टेप उठाने चाहिए जी. इसको लेकर मंत्री और एसपी के बीच में आपस में संवाद हुआ. उस संवाद में एसपी ने भी ये कहा कि मैं प्रयास कर रही हूं, उन्हें 2500 पर्ची भरे. मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इस पे और गंभीरता से प्रयास करने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है क्योंकि आप यहां के एसपी है. उसके बाद अगर एसपी पहले ये कहता है कि सरकार ये काम करा रही है तो पहले डिबेट उस पर होनी चाहिए. क्या कोई ऐसा एविडेंस है कि सरकार अवैध शराब या अवैध नशे का व्यापार करा रही है? अफसर को गेट आउट ऑफ हियर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? नहीं जवाहर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जवाहर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्री का कोई केस नहीं है. मंत्री जरूर कुछ कह सकते हैं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी मंत्री को ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए एक आईपीएस अफसर के खिलाफ. अधिकारी का वो तो एक व्यक्ति है, परंतु जब आप ये कहते हैं कि सरकार अवैध काम करा रही है तो आप हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को अपमानित करते हैं. फिर मंत्री को ये कहने का अधिकार नहीं है मंत्री एक औरत को अपमानित कर रहे हैं. आप अपमान नहीं कर रहे थे? क्या पत्नी एक औरत को अपमान नहीं कर रहे थे ये मंत्री? क्या हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों में 125 करोड़ महिलाएं नहीं है? ओके
Fair enough. क्या उन महिलाओं का अपमान नहीं है? आप इसको नहीं, देखिए, IPS अपमान अधिकारी, जरूर IPS अधिकारी अपमान होता है, जरूर हो रहा है, उसकी कोई शायद जाति सभी नहीं औरतों होती, का उसका कोई अपमान लिंग हो रहा है नहीं होता। हरियाणा में, पर जिस भाषा से ये कहा गया है शायद इसी कारण। पर जो भी हो, let me ask Dr. Ajay Kumar, spokesperson of the Congress, this. The point that Jawahar Yadav makes is that, look, let's not take these two words out of context. The minister was not happy with the work done by the IPS officer. That is why he was upset and he was angry. Does the Congress accept this argument? No, first of all, Vishnu, the way Jawaharji is speaking is ridiculous. You know, I've been in the Indian Police Service, and I can understand when the officer, a young officer, is saying that there is people in the government. Then what she means to say is that people associated with the government or with the political or the bureaucratic nexus may be involved. And this is what young officers anyway face throughout their careers. And to say that she is insulting, now you tell me if all the political or I'm not saying only politicians, but even the bureaucrats, especially in certain senior officers or certain politicians are involved in the liquor trade, if the young officer has said it, you know, one of the reasons why young officers like Sangeeta say this kind of thing is because they fortunately, you know, have their moral compass still intact. But she's a Dalit officer, she's a pride of Haryana. She came 75th in the UPSC. Her father was a painter in the same district. And this government which says Beti Bachao, Beti Padhao is insulting a young Dalit officer, young girl who has brought so much of, and they say कि 2.5 crore जो है हरियाणा का जनता को जो बेइज्जत कर रहे हैं, जवाहर जी बोल रहे हैं, she has brought respect to the 2.5 crores people of Haryana. She has proved that a girl from the most difficult circumstances can, you know, make such a great success of her life. Okay, let me put that to जवाहर जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आप कह रहे हो कि इन्होंने अपमान किया है सभी औरतों को हरियाणा में, पर कांग्रेस पार्टी को कहना है कि देखिए, ये एक औरत है जिन्होंने ये यूपीएससी एग्जाम में 73rd पोजीशन पे आई थी। ये शी इज अ यंग ऑफिसर, अ गुड ऑफिसर, इनका रेपुटेशन सही है, एक दलित अफसर है, तो आप इनको क्यों अपमान कर रहे हैं? अब मेरा निवेदन है, आग्रह से पूर्वक सुनिएगा। कांग्रेस की तो नीति रही है कि वो उसने कभी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखा ही नहीं। वो देखते हैं ये दलित है, वो देखते हैं ये महिला है, वो ये देखते हैं मुस्लिम है, वो ये देखते हैं ईसाई है, वो ये देखते हैं ये वाल्मीकि है, वो ये देखते हैं ये यादव है। कांग्रेस ने तो आज तक देश को जोड़ना चाहिए, उसकी जगह लगातार विभेद कैसे हो, समाज बटे कैसे, ये कांग्रेस की नीति रही है। परंतु मैं एक मूल प्रश्न पे आता हूं। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि ये एक अच्छी ऑफिसर है, हमने कहा उनको अपमानित किया, हमारी अच्छी ऑफिसर, हम आज भी कहते हैं। अगर परंतु अच्छी अजय कुमार है जी तो को ये आपने सोचना ट्रांसफर क्यों चाहिए। की है? एक मिनट, एक अंतिम मेरा बात पूरी कर लेने दीजिए। अजय कुमार जी से एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। यहां तो इस हरियाणा को नशे से बचाने की लड़ाई है, जो मंत्री भी लड़ रही है, हमारी एसपी भी लड़ रही है, पर अजय कुमार जी इसका उत्तर दे देंगे। जब रॉबर्ट वडेरा को इलीगल रूप से फायदा पहुंचाया जा रहा था, तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक खेमका को चार्जशीट क्यों दी थी? देखिए जी, क्योंकि जवाहर जी, नहीं, जवाहर जी, हम रॉबर्ट वडेरा को बचाने वाले अधिकारी को, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में डिबेट कर सकते हैं, हजारों बार कर चुके हैं और शायद हजारों बार करेंगे। आईएएस अधिकारी ने उसका खुलासा किया, ये दूसरी मामला है सर, बदल दिया। आप इस मामले पे बात कीजिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अगर अशोक खेमका को बदल दिया, जो कि रॉबर्ट वाड्रा को फायदा नहीं पहुंचने दे रहा था, उसको चार्जशीट कर दिया। अजय कुमार जी बताएंगे इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? That's a fair point. Sir, there is no, the Congress has gone and got rid of Ashok Khemka in the past. Why are you objecting to this state government getting rid or moving out, transferring an IPS officer? He makes a fair point. Let's not have double standards. First question is this Bharatiya Janata Party and the BJP RSS have been flogging this Mr. Robert Vadra's issue. 2 साल से राजस्थान में, 1 साल से हरियाणा में जांच कमीशन कुछ करने पाते, सिर्फ झूठ बोलने का इनकी ठेका देर by habitual misleader. One sec. First question. And Vishnu, I'm saying that one wrong doesn't make another right. So you're saying that the transfer of Ashok Khemka was wrong? What I'm trying to say no, but you just said that. Moving Mr. Ashok It's a big statement, Ajoy. Yeah, so what I'm saying, no, one sec, let me complete my statement. What I'm trying to say is, there is a government of BJP in Haryana right now. They have established an inquiry commission.
they are unable to, they will bring Mr. Robert Vadra, fool the people of this country continuously on this issue for next 5 years. Now they are in government, let them answer. Forget about Robert Vadra, Mr. let's speak on Anil the Vig. issue. Let's speak on the issue. Anil Vig, one sec, I'll finish off. Anil Vig insulted a lady doctor in Kurukshetra. Dr. Vandana Bhatia, he abused her and shouted at her. So Mr. Vig is a habitual insulting, and it has become a culture of this BJP government in Haryana to insult women. इस देश को बांटना बंद कर दो। पहले तो आपने महिला, अरे जवाहर जी, आप लोग जिस, आप महिला के रूप में, दलित के रूप में, पिछड़े के रूप में, अगड़े के रूप में मत बांटो देश को। आप लोग तो पीएचडी है देश का बांटने में। आपसे तो कोई अगर सीख लेना है कि देश को बंटवारा, नफरत, तो आप ये कहते हैं कि एक अधिकारी के साथ क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि एक महिला अधिकारी के साथ क्या हुआ, एक दलित अधिकारी के साथ क्या हुआ? क्यों बात सही है? आप किसी व्यक्ति को उसके पद के अनुसार देखिए। All right, okay. Jawahar ji, Ajoy, just wait. I want to go across to Amitabh Thakur. He's a serving IPS officer and perhaps a voice of reason in all of this. Mr. Thakur, I know you didn't want to get into a tu-tu meh-meh kind of debate. Unfortunately, that's the way it's gone. Be that as it may, how do you read this particular case? Because the state government may feel this is an officer, for whatever the reason, has not done enough in tackling illegal liquor consumption in this particular area of Fatehabad. On the other hand, there is video evidence of her being shouted at. What is right and what is wrong? See, the entire facts not known to me in the background, definitely I cannot say straight away who is right or wrong. But as far as whatever video has come, one thing, the question that you started with, there can be no denying the fact that the way finally the minister shouted at this young lady was definitely wrong, that's for sure, and I think no one can defend it, not even Dr. Jawahar. The second point I would like to make is that whatever happened there, if some inquiry had taken place about the misdeeds, in case there is some misdeed of the lady officer had come, an action had been taken, we never had any point or any qualms about it. But the way she suddenly got transferred after this incident, this shows that even if the minister shouts at an officer, it is always a tarbuja and kharbuz kind of a thing. Always the burden would fall on the officer. That is the second point. And the third point I would like to say is that definitely the way this lady was transferred, the lady officer has been transferred to me, is improper to be to the least. But Mr. Thakur, tell me one thing. Is this really about a woman officer versus a male officer? I don't accept that argument. Shouldn't any officer or any person be treated with respect? If a minister told you to shut up and to get out, Mr. Thakur, what would you do? Sir, my point is that, yes, you rightly said, and here I agree with Mr. Jawahar that why Dalit officer or woman officer or this officer or that officer. An officer is an officer, and I do amend myself to that extent, definitely. And why young and old officer also? The point is, a government servant is a government servant, and in the system they need to be treated with respect, with due respect, because they are doing some public service. And the way many of the politicians, when they get power and they get exhilarated, I think that is the issue. Okay. And compartmentalizing, definitely, I also was improper there, and I amend myself to that all right, extent. fair enough.